students, in this video we are doing trigonometric functions, exercise 3.3 and question 15. In these type of questions we have to apply transformation formula where we are converting product into sum or difference and we are having sum or difference into product. तो यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई में टर्म्स आ रही हैं sin a cos b cos a sin b cos a cos b sin a sin b and we are converting them into sum or difference. And here we are getting the terms in plus sin c plus sin b, yeah, difference sin c minus sin b, cos c plus cos t, cos c minus cos t, and we are converting them into product. So this is the 15th question. I am taking left hand side. I'll solve both the sides. So left hand side is cot 4x into sin 5x plus sin 3x. So it can be written as cos 4x upon sin x, sin 4x, और यहाँ पर मैं sin c plus sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. That formula is 2 sin c plus d by 2. This is 2 sin c, ये c है, and this one is d. Sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. So this is 5x plus 3x upon 2 and cos 5x minus 3x upon 2. याद रहेगा cos 4x sin 4x into 2 sin 8x upon 2 will give you 4x and cos 2x upon 2 will give you x cos x. So cos 4x sin 4x 2 sin 4x into cos x. This sin 4x will be cancelled and you will be left with 2 cos 4x into cos x. This is the left hand side which I have solved. Right hand side देखो, cot x sin 5x minus sin 3x. It can be written as cos x upon sin x. यहाँ sin c minus sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो. That formula is 2 cos c plus d by 2, 5x plus 3x upon 2 and sin 5x minus 3x upon 2, sin c minus d by 2. Simplify करो इसको. Cos x upon sin x will be 2 cos 8x upon 2 will give you 4x or sin 2x upon 2 will give you x. This sin x or sin x cancel हो जाएगा and you will be left with 2 cos 4x into cos x. So left hand side same, 2 cos 4x into cos x. Right hand side also 2 cos 4x into cos x. So left hand side is equal to right hand side. Question number 15. Question 16. We have to prove this left hand side equal to right hand side. Or question 19 I have also written left or right equal prove करने हैं. And same in both the questions we have to apply this formula. Sum or difference into product we are converting. So I am taking left hand side of 16th question. That is cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x. Cos c minus cos t. This formula you will apply, cos c minus cos t. So it will be minus 2 sin c plus d by 2, sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. 9x plus 5x upon 2 minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, 9x minus 5x upon 2, and in denominator sin c minus sin d. So this second formula you will apply. This is equal to 2 cos c plus t by 2, 17x plus 3x upon 2 sin c minus d by 2, 17x minus 3x upon 2.
So it will be minus this 2 and 2 you can cancel, minus sine 14 upon 2 will give you 7x. Sine 4x upon 2 will give you sine 2x. Cos 20x upon 2 will give you 10x. And sine 30 minus 14 by 2 will give you sine 7x. So ये दोनों cancel होके you will be left with sine 2x upon cos 10x. So this is your right hand side. Question 19. Left hand side loss के लिए left hand side is sine x plus sine 3x upon cos x plus cos 3x. Sin c plus d, this formula you will apply, and cos c plus d. Cos c plus cos d, sin c plus sin d. So it can be written as 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Again, this 2 and 2 you can cancel. So sin x plus 3x 4x upon 2 will give you sin 2x. Sin x minus 3x minus 2x upon 2 will give you cos of minus x. Cos 2x and cos of minus x. So you can cancel these two terms. Sin 2x upon cos 2x will give you tan 2x. So this is right answer. Now in this question, 21st question I have written. In this question we will apply the formula between these two terms, cos c plus cos d. Because when we add these two terms 4x plus 2x, इसको add करने पे you will get 6x और उसको जब 2 से divide करोगे तो 3x बन जाएगा. वो 3 इस cos 3x के साथ common आ जाएगा तुम्हारे पास. So we have to select the terms. मैंने ये दोनों select किए हैं. ये दोनों add करके cos c plus cos d, cos c plus d by 2 मिलेगा तुम्हें और c plus d by 2 will give you 6x upon 2, 3x आ जाएगा और वो cos 3x इस cos 3x के साथ we can take common there. And same here in the denominator, we will apply the formula between sin 4x and sin 2x. So cos 4x plus cos 2x and cos 3x upon sin 4x plus sin 2x plus sin 3x. Cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. और डिनोमिनेटर में sin c plus sin d, फर्स्ट फॉर्मूला written sin c plus sin d, that is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus sin 3x as it is. So let's go simplify now. 6x upon 2 will give you 3x. 4x minus 2x will give you cos x and plus cos 3x. 6x upon 2 will give you 3x sin 3x. 2x upon 2 will give you x cos x plus sin 3x. Now you take common from these two terms. You can take cos 3x common
inside the bracket 2 cos x plus 1 और यहां से sin 3x कॉमन लो, inside the bracket 2 cos x plus 1। ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। cos 3x अपॉन sin 3x will give you cot 3x और यही हमारे पास राइट हैंड साइड। This is 22nd question. You have to prove cot x, cot 2x minus cot 2x, cot 3x minus cot 3x और cot x is equal to 1। हमारे पास यहाँ तीन डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं x, 2x एंड 3x। तो हम इनमें रिलेशन बनाएंगे। 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस x। ऐसे तीन एंगल्स का रिलेशन tan में आ रहा और cot में आ रहा। यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड। उन तीन एंगल्स का रिलेशन चेक करो और फिर tan लेकर दोनों तरफ उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, उसमें फॉर्मूले अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। सो हियर आल्सो आई एम डूइंग द सेम। 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस x। तीन एंगल्स आ रहे थे, मैंने उनका रिलेशन लिखा है। नाउ आई एम टेकिंग tan both sides। tan both sides, just take tan both sides। tan 3x is equal to tan 2x plus x। लेफ्ट साइड में यू कैन, राइट साइड में यू कैन अप्लाई फॉर्मूला tan a plus b। tan a plus b that can be written as tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। ये फॉर्मूला आ जाएगा tan 2x plus tan x 1 minus tan 2x into tan x। Now you do cross multiplication। tan 3x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will get tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x और राइट हैंड साइड में you will get tan 2x plus tan x। Bring these two terms to left hand side और इसको right hand side ले जाओ। tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to, take this one to right hand side, tan 3x tan 2x or tan x। Now we will divide each term by tan 3x tan 2x tan x, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए, तो इस तीनों टर्म से डिवाइड करो इसको। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय tan 3x tan 2x and tan x। You will get tan 3x upon tan 3x into tan 2x upon the tan x minus tan 2x upon tan 3x tan 2x and tan x minus tan x upon same three terms tan 3x tan 2x और tan x is equal to, इस पूरे को डिवाइड करेंगे tan 3x tan 2x tan x से, सेम टर्म से, तो you'll get 1। यहाँ पर tan 3x कैंसिल हो गया और tan जो cot का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर cot 2x और ये भी न्यूमरेटर में जाके cot x आ गया हमारे पास, माइनस tan 2x कैंसिल विद tan 2x, ये cot 3x आ गया, ये भी cot x आ गया, माइनस tan x विल बी कैंसिल विद tan x, cot 3x और cot 2x is equal to 1। So this is the result which was asked in the question 20।